हेलो गाइस। तो आज का चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 11th का। तो जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Accumulation of area in blood is called angina, gout, uremia, osteoporosis। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। Accumulation of urea in blood is called uremia। Next question is the ornithine cycle removes two waste products from the blood in the liver. The ornithine cycle removes two waste products from the blood in the liver. They are CO2 and ammonia and uric acid, CO2 and urea, ammonia and urea। तो option D is correct। The ornithine cycle removes two waste products from the blood in the liver. They are ammonia and urea। और तो ऑर्निथिन साइकिल को और यूरिया साइकिल भी बोल सकते हो। occurs in liver, तो ammonia and urea। Next question is which of the following substances is most toxic? Ammonia, urea, uric acid, amino acid। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इज ammonia। Ammonia is the most toxic। Next question is a person who is on a long hunger strike and is surviving only on water will have on a long hunger strike and is surviving only on water will have more sodium in his urine, less amino acid in his urine, more glucose in his blood and less urea in his urine। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेस यूरिया इन हिज यूरिन। अगर कोई हंगर स्ट्राइक कर रहा है लॉन्ग एंड सिर्फ वाटर पी के, तो इसके पास सिर्फ लेस यूरिया, यूरिन में लेस यूरिया होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच anti-diuretic hormone। Deficiency of anti-diuretic hormone will result in increased volume of urine, decreased volume of urine, excessive secretion of urochrome and a change in pH from acidic to alkaline range। Option A is correct। Deficiency of anti-diuretic hormone will result in increased the volume of urine। Next question is which of the following is not a step in ureopoiesis? Which of the following is not a step in ureopoiesis or urine formation in the kidneys? So not a step in ureopoiesis or urine formation in the kidneys: selective reabsorption, deamination, glomerular filtration, tubular secretion। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, deamination। deamination जो है ये इज नॉट ए स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनीज। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये तीनों मतलब यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनीज का स्टेप है। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लामेशन of joints due to accumulation of uric acid causes arthritis, osteoporosis, gout, tetany। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोट। गोट इज ए वन टाइप ऑफ मतलब आर्थराइटिस भी बोल सकते हो, फूल जाता है जॉइंट में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूरिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज filtration। The filtration slits are formed in the Bowman's capsule by Henle loop, glomerular blood vessel, podocytes and nerve endings। Option C is correct, podocytes। The filtration slits are formed in the Bowman's capsule by podocytes। Filtration slits are formed in the Bowman capsule by podocytes। Option C is correct। Next question is functional unit of kidney is nephron। Option A is correct, functional unit of kidney is nephron। Next question is the volume of urine is controlled by anti-diuretic hormone, thyroxine, insulin, adrenaline। तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज कंट्रोल बाय एडीएच कंट्रोल करता है। द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH।
Next question is, first organic chemical synthesized is. First organic chemical synthesized is glucose, methane, benzene, urea. So option D is correct. First organic chemical synthesized is urea. First organic chemical synthesized is urea. Option D is correct. Next question is, smallest structural. The smallest structural and functional unit of the kidney is called nephron. Nephron, smallest structural and functional unit of the kidney is called nephron. Option B is correct. Next question is, characteristic color of human feces is responsible for. Characteristic color of human feces is responsible for urobilin, estercobilin, and indole scatol. Option B is correct. Estercobilin. The characteristic color of human feces is responsible for estercobilin. Next question is, so question 14, which of the following vitamins can normally be excreted from human excreta or human sweat? तो विटामिन दिया हुआ है, can normally excreted from human excreta or human sweat. विटामिन A, E, C, D. तो फैट सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन A, D, E एंड K. ये फैट सोल्यूबल विटामिन है. एंड वाटर सोल्यूबल जो होता है, वाटर सोल्यूबल इज विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड C. एंड विटामिन को डिस्कवर्ड बाय कश्मीर फांक ने डिस्कवर किया गया था विटामिन. एंड फिर भी फैट सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन A, D, E एंड K. वाटर सोल्यूबल विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड C. तो इसमें ऑप्शन C इज करेक्ट होगा. एक्सक्रीटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्सक्रेटा और ह्यूमन स्वेट. ऑप्शन C इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन A इज करेक्ट होगा. The smell of urine is due to the bacterial attack of ammonia of urea. Identify the correct statement. Option A is correct. The smell of urine is due to the bacterial attack of ammonia of urea. Next question is, where are glucose and amino acid absorbed? Loop of Henle, collecting duct, distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule. Option D is correct. Where are glucose and amino acid absorbed? Option D is correct. Proximal convoluted tubule. Next question is, which of the following is a part of the ornithine cycle? Part of the ornithine cycle. तो ornithine cycle को यूरिया साइकिल भी बोला जाता है. तो which of the following is the part of ornithine cycle? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ornithine arginine. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Ornithine, citrulline and arginine is a part of ornithine or urea cycle. Option B is correct. Ornithine, citrulline and arginine. Next question is, maximum reabsorption in the kidney occurs in. Maximum reabsorption in the kidney occurs in renal capsule, collector duct, proximal convoluted tubule, ascending arm of loop of Henle. तो ऑप्शन C is correct. Proximal convoluted tubule. Maximum reabsorption in the kidney occurs in proximal convoluted tubule. Next question is, the layers of Bowman's capsule is formed of. Layers of Bowman's capsule is formed of cuboidal epithelium, squamous, columnar, ciliated epithelium. तो ऑप्शन B is correct. Layers of Bowman's capsule is formed of squamous epithelium. Next question is, functional unit of kidney is nephron. Option C is correct. Functional unit of kidney is nephron. तो नेफ्रॉन जो है ये किडनी के अंदर लोकेटेड है एंड ये इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है, लाइक यूरिन फॉर्मेट करता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Henle's loop is meant for absorption of potassium, glucose, urea, sodium. Option D is correct. Henle's loop is meant for absorption of sodium. Next question is, a minute vessel of peritubular capillaries network runs parallel to the Henle's loop, forming a dash shaped vasa recta. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, U shape.
द बासारेक्टर जो बासारेक्टर है, बासारेक्टर यू शेप्ड, बासारेक्टर यू शेप्ड कैपिलरीज, यू शेप्ड कैपिलरीज पैरेललिंग Henle's loop. Option A is correct. Next question is, in human urinary system, ureter is directly connected with, in human urinary system ureter is directly connected with, तो ureter जो है किसके साथ कनेक्टेड है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इन ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम यूरेटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ यूरिनरी ब्लैडर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग important yellow color to urine in humans, which of the following impart yellow color to urine in humans, following impart yellow color to urine in humans. तो ऑप्शन इज कोलेस्टेरोल, लीम्फ, यूरोक्रोम एंड बाइल सॉल्ट्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूरोक्रोम. which of the following impart yellow color to urine in humans? Option C is correct, यूरोक्रोम. Next question is, when an individual consumes a large amount of protein, when an individual consumes a large amount of protein, what will he or she will excrete? More urea and uric acid, more glucose, salt, ammonia. So option A is correct. When an individual consumes a large amount of protein, what will he or she will excrete? Consumes large amount of protein, तो more urea and uric acid excrete होगा. मतलब जब large amount of प्रोटीन कंज्यूम करेगा तब शी विल एक्सक्रीट मोर यूरिया एंड यूरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो राइट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज, राइट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज, तो फर्स्ट फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेशन, बाद में रीअब्जॉर्प्शन होता है, बाद में सीक्रेशन होता है. तो यहाँ अगर ऑप्शन देखें तो राइट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. पहले फिल्ट्रेशन, बाद में रीअब्जॉर्प्शन, बाद में सीक्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए नेफ्रॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजियंस, प्रोक्सिमल नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल नेफ्रॉन. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लूप ऑफ हेनली? अगर नेफ्रॉन 3 मेजर रीजियंस में अगर डिवाइडेड है, प्रोक्सिमल नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल नेफ्रॉन, तो कौन सा लूप ऑफ हेनली के लिए करेक्ट होगा? तो फर्स्ट 4/5 of the descending limb constitutes the thick segment and has the same diameter as that of the proximal tubule. Option A is correct. The first 4/5 of the descending limb constitutes the thick segment and has the same diameter as that of the proximal tubule. The first 4/5 of the descending limb constitutes the thick segment and has the same diameter as that of proximal tubule. Next question is, human urine is usually acidic. Human urine is usually acidic because, तो इसका जो कारण है, ऑप्शन ए करेक्ट. ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली acidic because hydrogen ions are actively secreted into the filtrate. Human urine is usually acidic because hydrogen ions are actively secreted into the filtrate. Next question is, kidneys perform all function except, kidneys perform all the function except, तो filtration of blood, regulation of BP, antibodies, secretion of antibodies. ऑप्शन सी इज करेक्ट. मतलब इसके लिए करेक्ट, kidneys perform all the function except ऑप्शन सी. ये जितने तीनों मतलब फंक्शन को किडनीज परफॉर्म करता है, रेगुलेशन ऑफ पीएच इन द बॉडी फ्लूइड. एंटीबॉडीज तो नहीं परफॉर्म नहीं करेगा किडनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A person is undergoing prolonged fasting. A person is undergoing prolonged fasting. His urine will be found to contain abnormal quantities of fats, amino acid, glucose, ketones. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ketones. During prolonged fasting, तो ड्यूरिंग prolonged fasting तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी ब्रेक्स डाउन फैट्स को मतलब ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, प्रोड्यूसिंग कीटोन्स. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैट्स को ब्रेक करके एनर्जी बनाएगा एंड प्रोड्यूस करेगा कीटोन्स. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट 31 क्वेश्चन इज, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन नॉर्मल ह्यूमन इज. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन नॉर्मल ह्यूमन इज
180 liters per day. Option A is correct. Glomerular filtration rate in normal human is 180 liters per day. The next question is, which of the following is removed from the filtrate at the loop of Henle? Which of the following is removed from the filtrate at the loop of Henle? Amino acid, hormones, water, glucose. So option C is correct, water. Which of the following removed from the filtration at the loop of Henle? Water. Next question is, uric acid. Uric acid is excretory waste. Uric acid is a excretory waste in one of the following birds, amphibians, fishes, cyclostomata. Option A is correct, birds. Uric acid is excretory waste in one of the following birds. तो birds जो है ये uric acid को excrete करता है to conserve water and forming a solid waste. Next question is, Henle's loop is found in. Henle's loop कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए ही करेक्ट, नेफ्रॉन. तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है एंड हेनलीस लूप इसमें पाया जाता है नेफ्रॉन के अंदर. तो हेनलीस लूप ये जो है ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है जो मतलब नेफ्रॉन ऑफ द किडनी में पाया जाता है. यू शेप्ड स्ट्रक्चर का है हेनलीस लूप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिनरी ब्लडर इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस क्यूबोइडल ट्रांजिशनल. तो ये क्वेश्चन पहले भी एक बार मिला है शायद. तो ऑप्शन urinary bladder is lined by transitional epithelium. Urinary epithelium is lined by transitional epithelium. Next question is, function of allantois in mammal is. Function of allantois in mammal is respiration only, excretion, nutrition, excretion and respiration, protection from shocks. So option C correct. Function of allantois in mammal is nutrition, excretion and respiration. Function of allantois in mammal is nutrition, excretion and respiration. Next question is, uremia. Uremia is a disease related to the failure of antidiuretic hormone and excess of antidiuretic secretion and a failure of kidney, low blood pressure. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फेलियर ऑफ किडनी. यूरेमिया इज ए डिजीज रिलेटेड टू द फेलियर ऑफ किडनी. जब किडनी फेल हो जाता है तो यूरेमिया होता है. तो यूरेमिया इज ए डिजीज रिलेटेड टू द फेलियर ऑफ किडनी. Next question is, which one of the following body function is not performed by kidney? तो बोला है कौन सा बॉडी फंक्शन नीचे दिया हुआ है मतलब किडनी परफॉर्म नहीं करता है. तो ऑप्शन एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ब्लड को मतलब बैलेंस करना, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड ब्लड कॉर्पस्कुल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड ब्लड कॉर्पस्कुल इज नॉट बॉडी फंक्शन टू परफॉर्म बाय किडनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, smallest functional and structural unit of kidney is called. Smallest functional and structural unit of kidney is, ये भी तो नेफ्रॉन ही होगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेफ्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैन द यूरिया इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन लिवर, किडनी. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिवर. इन मैन द यूरिया इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन लिवर. तो ये जो होता है इन मैन यूरिया इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन लिवर थ्रू यूरिया साइकिल और नितिन साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड बोला है कौन सा करेक्ट एंड कौन सा इनकरेक्ट है. तो स्टेटमेंट वन इज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पॉजिटिव एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. ऑप्शन ए. एंड ऑप्शन स्टेटमेंट टू, एंजियोटेंसिन 2 इज पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट. बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है. कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पॉजिटिव एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ स्टेटमेंट 2. एंजियोटेंसिन 2 इज पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर. बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where does the urethra originate from? Where does the urethra originate from? Epididymis, seminal vesicle, vas deferens, urinary bladder. So option D is correct, urinary bladder. Where does the urethra originate from? Option D is correct, urinary bladder. Next question is hepatic portal. Hepatic portal vein carries blood from intestine to the hepatic portal vein carries blood from intestine to the dash before it is delivered to the systemic circulation, heart, liver, kidney, pancreas.
तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लीवर। हिपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर। क्वेश्चन 43 बोला हिपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर, तो बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज increased uric acid level is found in Wilson's disease, rheumatic fever, Parkinson's disease, gout and eye। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, gout and eye। इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल इज फाउंड इन गोट और आई, ये जॉइंट में होता है, पूरा जॉइंट फूल जाता है तो गोट आई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इसके लिए। तो यह था टोटल 44 क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं।